Good evening, everyone. So, today we are going to talk about introduction to fasting. We have created a community where we are going to help you to fast. And if you have any questions, any queries, you're going to do it along with the community and you will have all your questions answered. Let me wait for Shifa if I can see. Where is she? Let me invite her. To come. And in the meantime, if you have any questions regarding fasting, do let me know in the comments. I'll read them and I'll help you with your questions. So hello to everyone. I know a lot of people have joined from UAE and some of you are from India. Hello everyone. Hope you're doing good. If you have any questions related to fasting, please put in the comments. I'll definitely answer those questions. And if there's any specific, I'll post everything in the group as well that we have created on WhatsApp, where we'll be helping you personally with your questions and queries related to fasting. Fasting is basically a lifestyle that we have, really forgotten. It's a very simple tool which doesn't cost us money and we're not using it in our day-to-day life. Shifa is unable to join. Let me send her the request again. So just waiting for Shifa to come in. Check. If you have any questions, please post in the comments. In the meantime, I'll take up some questions if you have, and then we'll start. Okay, so Ziana, you want to know, you have already been into 24 hours of fasting, and yeah, then you can, the next day you take another Unimate. That's a really good thing. And in a day, you can have 2 Unimate and you can continue fasting. So have a lot of water. You can have water and ginger. You can have water, lemon, ginger. That is something that is really helpful. Can I drink Unimate throughout the day while fasting rather than at one go? So you can have it, make sure you don't go over 2 Unimate in a day. You can have it like, in a sipping format rather than taking it in a one go. Definitely you can do that. Yes. But if you have already done like, 24 hours, first time, if you're doing, then go for just 24 hours directly. Do not go for more than 24 hours. So first week, go for 24 hours. And then next week, you can, after 2 to 3 weeks, you can try for 36 hours. And then you can go on to 48, 72 that I'll explain in the video. I want to start 12-hour fasting in the evening to morning, but early morning as I wake up, I am feeling hungry. That's another sign that you are getting insulin resistant. That is why you are feeling very hungry as you wake up in the morning. And we mostly eat out of habits. So what you have to do is make sure that you have your food at least 2 to 3 hours before you sleep, and then you go to bed. You don't go to bed with a heavy meal because it is going to make you insulin resistant. And if you are insulin resistant, you're going to feel more hungry. Yes, you can have apple cider vinegar as well in the morning, dilute it and have it. That is also a good thing to have. Let me see, where is Shifa? So we can, in the meantime, please post your questions. I'll take up in the live as well as we go and cover the topics. I'll
explain how are we going to do it? What is the agenda of the community? How are we going to do it together? So, this is a very common question that people are scared that they will get acidity, but uh, it happens. It happens with people when they are fasting, they get acidic because in our stomach, when there is nothing, there is no food, our stomach tries to make more acid, which can make you feel acidic, but it goes away. It takes some time in order to help you with acidity when you are eating. Have little more bananas and avoid little citrus fruits in the beginning. And apart from that, you can have banana, you can have oatmeal, you can have little ginger in your food that will really help you with acidity. And apart from this, make sure you do not go to bed with a heavy meal. That is something which causes a lot of acidity when you are in fasting. And it takes some time for your body to adjust to the fasting lifestyle. So it will take some time for you to adjust. Initially, you will feel like you are feeling acidic, have more water, lemon, ginger during the day, and a little more probiotic when you are having your meals. So, can I have mint green tea or matcha tea while fasting? Matcha tea, it really depends. You need to check the ingredients. If there is no sugar added in the matcha tea or the mint green tea, you can have it. Or Unimate is the best, which does not cause your insulin to come up. So matcha tea, you really need to check if there is any ingredient, particularly sugar, that can break your fast. Other than that, green tea, mint green tea you can have, but make sure you check the ingredients that there is no sugar added in it. I tried fasting yesterday, had Unimat in the morning. In the afternoon, my body started acting out by shivering and not able to concentrate on work. Went okay. So maybe if you are suffering from any particular, you know, thing where you're not able to go to fasting for a longer hours, then just start with smaller fasting hours. So I really need to know how many hours you were actually into fasting by the time you had this symptoms. So what was your last meal, and the next day, was it like directly you went to 24 hours? So what was the time of fasting when you started feeling these symptoms? Can you please let me know that? So Payal, please let me know what was the time when you started feeling like, shivering and you're not able to concentrate. And if your BP went goes like rock bottom, then you have to eat your meal. Please don't go to that situation that you start feeling things like this. Also, let me know what was the time, like how many hours you were into fasting by that time. So let me know that. That is something which is really important. Then I can answer this question for you. Let me try if Shifa is here. Yes, Annie, you had your last meal at 7 p.m. previous day, had Unimate, so already 12 hours, and started acting after 11. So 7, 5, it's 12. So you were already into 16 hours of fasting. So have you ever done this before, or like this was the first time that you tried 16 hours of fasting? I'm going to try fasting for the first time. What's the ideal duration hours for beginners? That's a very good question. See, if you have never done fasting before, so start with at least 12 hours. 12 hours, like from your last meal to the next day, start with 12 hours of fasting. And that is the good place to start if you have never done fasting before. And then alternate day, you can have, once you're comfortable, then alternate day, go to 13 to 14 hours, 12, 13, 14, 12, 13, 14. That's where you should start your fasting. And when you start, you have your meal at least 2 to 3 hours before you sleep. Don't go to sleep with a heavy meal. Otherwise, you'll feel a lot more acidic the next day when you're fasting. So, Payal is, it happened since I started Unimate, which is around a week. Uh, yeah, I wanted to know, like, was it the first time that you did fasting for 16 hours, or you have done
before also, or was it directly like you normally, how many hours of fasting you do normally? So Sam is asking about the medications that needs to, okay. If you are having some issues, like specific issues, anything like blood pressure or other issues, then preferably I would suggest that you have an early meal in the evening, because most of the time your medications are in the morning when you get up. You have to take your medicines. So you have your early meal, so you can at least start with 12 to 14 hours of fasting. In that way, you can take care of your medicines also, and you can enjoy the fasting lifestyle as well. And apart from that, if there is specifically you are suffering from blood pressure, type 2 diabetes, thyroid, cholesterol, then definitely get in touch with me. That will something we you will need to have, one-on-one consultation that will help you a lot more, because it is not a general case. While I wanted to know one thing, was it the first time that you did your fasting for 16 hours, or how many hours you are already into fasting? That is something I would like to know so I can help you. Okay, so what's Unimate and how it helps in fasting? So Unimate, it's a plant, it's made from a plant which is yerba. It helps you to stabilize your blood sugar by helping your brain to suppress the hunger hormone, that helps your body to get into ketosis at the same time, and also helps your blood sugar to be stable throughout the day. So that is where it gets very easier for you to fast rather than using your willpower to do it, because fasting is something, a lifestyle which is not sustainable by everyone, because we are so used to eating our meals every 2 to 3 hours, that Unimate really helps you to stabilize your blood sugar. You're not struggling with your willpower, and it helps you to stay away. It really helps you with acidity issues, and you're not really struggling with fasting. I did intermittent fasting before also, like 18-20 hours, but now uh, how can I use these tools while fasting? Okay, it's very easy to use these tools. So one is fiber, and the other one is, which is a feel great system that we use along with fasting, that really helps people to fast a lot more easier without using their willpower. So what you can do is, just before you have your meal, you need to have the fiber, because right now our fiber intake is really low with the food that we have. And in the morning, as you get up, so instead of your regular tea, coffee, you can have Unimate instead of that. So it's a very simple way to fast along with the tools, because they really help you to stabilize your blood sugar and helps your body to get into ketosis, which helps you to start utilizing your stored body fat for energy. And it gets easier. You're not struggling with the fasting, intermittent fasting. So Payal is, that's normal. I take my dinner at max around 7 p.m. and I take Unimate at 7. And I stay under fasting till 1 p.m. but I'm not able to since this session started. So thought of asking here. Okay, Payal, it also depends on our menstrual cycle when we are fasting. So on few days, it's very easy for us to fast. And there are times if you are doing fasting just before your period, you're advised not to do that. So there are different times when fasting will come very natural to us. And there are times when our bodies are going to require little more carbohydrates, and we will need not do the fasting. So I'll post this in the WhatsApp group as per the cycle when we should fast and how long we should fast. There are days when we can just fast for like 10-12 hours. That is the time before our periods. And there are days when we can just fast for like 24 hours. That is around the 9th to 12th day of the period. So there is a specific cycle that ladies with a cycle should fast as per their cycle days, as per your period days, when you start the first day and when is your, like, till 24th, 21st, 22nd day is the time when we should be fasting. And there is a different length of fast. So initially, to start with, just stick to 12 to 16 hours of fasting. And if you are doing the fast just before your periods, don't do it. You should not fast if your periods are about to come. So just make sure, if, like, did you try fasting during that particular time? I'll share that link in the WhatsApp community, where I will let you know what's the ideal time to fast during the
as per the cycle. What we see, what be it or what not be, what please it is. Ayaz, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया है. Can you please let me know again? When okay. So as a fitness trainer, I burn more calories. How to be energetic during fasting? I tell you, I do half marathon and I do my workout in fasting state. I stay a lot more energetic because right now this is the key in fasting. If you are able to metabolically switch from sugar burning to fat burning, you will stay with lot of energy. You will be energetic throughout your day because our bodies can now switch from sugar burning to fat burning when we get into the routine of metabolic switching. So this will be the main target, that with this community I can help you to metabolically switch from sugar burning to fat burning. When you are in the fat burning zone, you will be getting a lot more energy and it is going to be a very stable energy because then your digestion is not getting used, the blood is not going to digestive system, and you're just driving energy from a different pathway of fat burning. You'll be a lot more energetic. That's what I can tell you for sure. Try it and you will see that we had this concept wrong, that we need to eat in order to be energetic. You will see. Once you start doing this, you'll see the changes. When I'm fasting for 24 hours, can I have Unimate little by little and finish in 2 to 3 hours or in one go? You can have it like in 2 to 3 hours as well. You don't need to finish it in one go. And any more questions? क्या खाएं और क्या ना खाएं after the fasting? That's a very good question. So when you break your fast, break your fast, break your fast with a fat, pure fat. That is something which will again help you to stay in the autophagy phase, and it again stabilizes your blood sugar for the entire day, and you're not going to feel very hungry. So break your fast with avocado. That's the best thing. Or you can break your fast with an egg. If you're a non-vegetarian, you can have chicken broth. Or if you're a vegetarian, you can have an avocado on a toast. That is something really good to break your fast with. Or you can have something like nut butters on a toast. That is also something you can do. And if you are breaking your 24-hour fasting, make sure that you do it with complete fat. Avocado is something which is really good that you should be breaking your fast with. But it say on Unimate that we should not keep it too long after the drink is prepared. I have not seen that. You can definitely have it. Like at least 2 to 3 hours you can have it. Nothing like it is for the fiber, that when you prepare your fiber, you have to drink it immediately. You don't need not like wait. Let me invite Shifa again. So let's see if Shifa is here. Yes. Hello. Let me connect. Take a minute, huh? Yes. So please come. Welcome. So we had a lot of questions. Miss हो गए क्या and मेरे we're just waiting questions? for you. Sorry. Miss हो गए क्या मेरे questions? Yeah. बहुत सारी questions आपने miss किए. So we had a lot of questions. Oh. People are really excited to start their fasting journey, and it's going to be a good one. Guys. Just a moment. मैं अपना stand लगा रही हूँ. Hi. Yes, take your time. I In didn't the even meantime, get I'll just dressed. take another question if there is anyone. Can you guys see me? Yes. I love you, Bhavni. Somebody saying I love you, Bhavni. Shipadi, more power to you. Hi, Sabir Raza. Oh, Sabir, how are you?
ये क्या बात कर रहे हो आप? Guys, we have introduced a free fasting group which will soon not be free. So it is for the community, and fasting is a tool that humans have forgotten. So we need to use it. All right. Keep, let other people join in. Bhavneet, Yes. I am almost 20 minutes late. I slept. Can't you see the glow on my face? I slept. I can see that. I can see I'm that so really sorry well. to keep you waiting. Hello, ma'am. That's okay. Assalamu But we alaikum. had Alhamdulillah. really good question and answers from people, so it was something Uh, so, hi, Razak. How good. are you? So, should we talk about it again, or are you just want to talk? You don't want to talk, or what is it? So we had like normally people had questions which are very common, अच्छा, like ग्रुप what में to से eat, लोग what आए हैं not to जो eat. Yes, 280 yes, लोग हैं, या yes, ग्रुप में से लोग yes, आए yes. हैं? A lot of हाय people are यामी, here. हाउ यू? ग्रुप में से लोग आए हैं? Yes, yes. आपका Lot of लिंक people are here and they have. लिंक जो है मैंने बायो में डाल दिया है. सो ठीक है. भवनीत, डू यू केयर टू टॉक अबाउट इट? मतलब जो मैंने मिस किया, या बात करोगी, या व्हाटएवर इट. सो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ कि Yes, इंट्रोडक्शन ये है कि फास्टिंग जो है, मेरी तरफ से मैं बात करती हूँ फॉर 5 मिनट्स. yes, फास्टिंग जो है वो एक फ्री टूल है जो ह्यूमंस फॉरगेट कर चुके हैं, बिकॉज फूड इंडस्ट्री जो है एक ही चीज पे हुक्ड है कि वो ज्यादा प्रोडक्ट आपको बेचे, आपको सेल करे. तो ये कॉन्सेप्ट निकाला गया है ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक, जबकि ये ह्यूमंस के लिए जरूरी है ही नहीं. ठीक है. दे आर जस्ट हंग अप ऑन सेलिंग यू मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स. ऑलराइट. तो फास्टिंग इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि देखो हमारा बॉडी डिजाइन हुआ है ड्रॉट एंड फेमाइन में भी सर्वाइव करने के लिए. ड्रॉट एंड फेमाइन क्या है? सूखा जिसको कहते हैं ना, फसल खराब हो गई या फसल बर्बाद हो गया या 6 महीने के लिए खाना नहीं है. हमारे बाप दादा ह्यूमंस एक जनरेशन पीछे इसमें सर्वाइव करने के लिए डिजाइन किया गया है हमारे को. आजकल के दौर में पिछले 30 इयर्स से फूड इतना ज्यादा हो गया है, हम लोग कैलोरीज से इतना सराउंडेड है कि आप किचन कैबिनेट क्या ऑफिस डेस्क में से लेते हुए बेड में बाजू में सोते हैं तो लोग ड्रॉवर में फूड और कैलोरीज रखते हैं. राइट. पहले जमाना ऐसा नहीं था. इनफैक्ट मेरे दादा तक के एज में, विच इज लाइक ही वॉज लाइक 70-80, उनके जनरेशन में, यानी कि एक जनरेशन पीछे तक चावल को स्मगल करके लाया जाता था. यानी अगर 5 लोग हैं फैमिली में तो 5 लोग के हिसाब से ही चावल राशन दिया जाता था इंडिया में या कहीं पर भी. तो फूड इतना डिफिकल्ट था, ऑलराइट, टू गेट योर हैंड्स ऑन कैलोरीज. तो राइट ना, वो भी फास्ट फूड खतरनाक. यस, एग्जैक्टली. तो वी आर सराउंडेड बाय फूड और हमारे को ऐसा मार्केट किया जाता है फूड. यहाँ से KFC का एड, यहाँ से बर्गर किंग का एड, यहाँ से फूड का एड. तुम ट्रिगर हो जाते हो खाने पर और तुमको लगता है कि 3 मील और एक स्नैक तुमको हेल्दी रखेगा, जो कि सरासर झूठ है. अनटिल अनलेस आप एक प्रो एथलीट हो या एक पावर लिफ्टर हो या एक बॉडी बिल्डर हो, आपको हर 2 या 3 घंटे में खाने की जरूरत नहीं है. अनटिल अनलेस यू आर नॉट एन एथलीट. अगर आप नॉर्मल वर्क करते हो, हाउसवाइफ हो या डेस्क जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको पर डे 2 मील इज मोर देन इनफ विदाउट स्नैकिंग इफ यू आर गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन दैट. ठीक है. तो reintroducing fasting to you, which is free for you, and we will teach you how to do it, and Bhavneet will take the lead on this. All right. So over to you, yes, Bhavneet. हमारा गोल क्या है? ग्रुप का 4 गोल्स है हमारे, राइट? yes. So we have 4 different goals. सबसे पहला गोल तो ये है कि हम लोगों को एक नॉर्मल हेल्दी फास्टिंग का जो टाइम पीरियड है, दैट लॉट ऑफ पीपल आई सी जिन्होंने 12 घंटे भी कभी फास्ट नहीं किया है. that might be very surprising, बट लोग 12 घंटे भी फास्ट नहीं करते हैं. रात को 10 बजे खाना खाया, सुबह 6 बजे की चाय आ जाती है. दे नॉट एबल टू फास्ट एट ऑल. एंड उसपे भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रात को 10 बजे खाएंगे और बोलेंगे सुबह हमने 10 बजे खाया, बट वो जो चाय है ना उसको इग्नोर कर देते हैं. बट द चाय विद द आज मेरे शुगर साथ एंड मिल्क ऐसा हैज हुआ. आज मेरे साथ ऐसा ऑलरेडी हुआ. एक बंदी कह रही है 1 kg मैंने लूज किया बट इतना तो इफेक्ट नहीं किया, ये वो.
तो कह रही है कि मैं 9 o'clock लास्ट मील लेती थी, लेकिन बेड टाइम पे 11-12 बजे जो है ना मैं लस्सी या दूध लेती थी। मैंने कहा कहाँ हुई आपकी फास्टिंग, फिर भी आपने 21 लॉस किया ना। आई वाज Yes, शॉक्ड। yes, तो या yes. So that's a very common thing. So first and foremost thing, फास्टिंग में अगर आप टी कॉफी ले रहे हो या रात को दूध आपने ले लिया, आपने बोला कि 10 बजे रात को खाना खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया एंड सुबह हमने 10 बजे खाया, बट वो जो चाय कॉफी है ना उसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, लाइक वी डोंट इवन कंसिडर कि हाँ वो भी कुछ दैट खाने इज में ऑलमोस्ट एडिशन है। इट्स 100 लाइक और 120 कैलोरीज यस, विदाउट yes, and it's न्यूट्रिशन, breaking your fast. ब्रेकिंग द Yes, and फास्ट। it's breaking your fast. Yes. So you're not getting the fasting benefits even if you're doing it. So 12 hours, that is like dry fasting. You can have water. That is something which is allowed. But we start with अगर आपने 12 घंटे भी कभी फास्ट नहीं किया है, तो 12 घंटे is the minimum. And if you're already doing it, yeah, if you're already doing it, then 12 to 14 hours is the first thing that we want to, that we want people to start in the first week. So first week is for everyone to just get on that normal फ्लो के सब लोग साथ में कर सकें. सो नेक्स्ट वीक से हमारा जो 16 आवर्स वाला है, हमारा प्रॉपर रूटीन है, वो हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट वीक इज वी विल हेल्प पीपल what to eat, what not to eat. We will post in the group that will help people to, you know, change their lifestyle, even if they are fasting. But बहुत सारे foods ऐसे होंगे जो नहीं खाने चाहिए. हमें अपना जो कुकिंग ऑयल है वो चेंज करना चाहिए. So that will help people के these are the changes apart from fasting. क्या क्या करनी है. For So the first month will of be September, for the month of September, first let's week. say, Yes, या फर्स्ट वीक, लेट्स से हम सबको ये कहेंगे कि पहले फर्स्ट डे अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप कितना आवर्स yes, एक्चुअली फास्ट कर रहे हो, 8 घंटा 9 घंटा yes, या क्या। और अगर yes, जितना भी yes. आवर्स फास्ट कर रहे हो, समझो कोई बंदा 10 घंटा फास्ट करता है, ठीक है, Then यानी 12 is रात को 10 बजे खा रहा है और सुबह में 10 बजे खा रहा है, तो वो 12 घंटे हो गए, या सुबह में 8 बजे खा रहा है तो 12 घंटे हो गए, तो yes, उसको कहेंगे +4 कर दो। yes. +4 कर दिया उसने तो 14 आवर्स हो गए। एनीबडी कैन, या +2 इज ऑल्सो कर फाइन, बट आई वुड से कि कर 4 आराम से लोग कर सकते हैं, राइट। कर सकते +2 या हैं. +4 फर्स्ट कर वीक सकते में हैं आप। लेट्स बहुत बहुत बार ना मेंटली इट स्टार्ट्स प्लेइंग अराउंड विद पीपल कि ओके इतने घंटे फास्ट करना है. सो +2 किया, इट्स वेरी इजी टू इट इज स्टार्ट डिपेंडिंग विद. ऑन यू, आप देखो कि आपको +2 करना है या यस, +4 करना है, जस्ट डोंट गो, मतलब उसके बाद में वो बियॉन्ड. कमिटमेंट कर दिया गया है तो मूव फॉरवर्ड, डोंट गो बैक, डोंट गो बैक। यहाँ यस, आपको परहेज करने के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ आपको कुछ खाने के लिए छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ आपको रेस्ट्रिक्टेड डाइटिंग करने के लिए नहीं बोल रहे, बस इतना कह रहे हैं कि 24 आवर्स के विंडो में एटलीस्ट 14 घंटे आप फास्ट करो, यानी कि आपका डिनर से लेके आपका ब्रेकफास्ट में 14 घंटे की फास्ट होना चाहिए, जिसमें 8 या 9 घंटे तो आप सोते ही रहोगे यार। यस, क्या इट्स 9 घंटे तो आप सोते ही रहोगे, राइट। यस. So it's not a big deal. Walaikum assalam, King Khan. So anyone who wants to join this fasting community, the link is in my link tree, link bio. Bio में link है, but Instagram में कोई glitch है. I'm posting this on my story, the link. But Instagram में पता नहीं क्या glitch आ रहा है, link tree का accept नहीं कर रहा, it's giving some a warning. And this video I'm going to post it on my YouTube channel as well, so you can go click and watch. ठीक है, तो ये तो एक किस्म का फास्टिंग हो गया भवनीत, जो कि डेली फास्टिंग हर किसी को करना चाहिए. दैट इज 14 hours, minimum 14 hours. Then if you're a pro, your insulin is better, your metabolic flexibility is better. I'll tell you, metabolic flexibility आपको देखना है अगर, तो एक चीज टेस्ट कीजिए, सुबह उठकर अगर 5 से 6 घंटा या 4 घंटा भी आप विदाउट फूड जाते हो, हंगर पैंक्स नहीं होते हैं, हेडेक्स नहीं होते, डिहाइड्रेशन फील नहीं होता, मूड डिप्लीट नहीं होता, तो दैट इज अ साइन कि आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो. अगर उठते ही आपको 1 घंटे में कुछ चाहिए, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, फलां दिन का आप चाय या फूड के बिना नहीं रह सकते, दैट इज अ साइन दैट यू आर नॉट मेटाबॉलिकली हेल्दी. ठीक है, तो ये एक साइन है. तो अपने आप को टेस्ट करो कि सुबह उठ के 4 से 6 घंटा अगर आप भूखे रह सकते हो सिर्फ पानी पर, तो दैट इज अ साइन यू आर मेटाबॉलिकली हेल्दी. तो पहला फास्टिंग हो गया डेली फास्टिंग, विच इज 14 घंटे, 16 घंटे या 18 घंटे. मेनली एवरेज पूरी पब्लिक 16 आवर्स तो करती ही है, जो हेल्थ और फिटनेस पे जो बंदे हैं. कोई भी फिटनेस गुरु को ले लो आप, कोई भी फिटनेस कोच को ले लो आप, बड़े से बड़े, दे आर फास्टिंग फॉर 16 आवर्स. दे माइट नॉट टेल यू,
they are eating heavy food, fat wale food, ये वाले food, but they are fasting for 16 hours. It's a fact. Yes. 16 और 18 Yes. आवर्स वो फास्ट कर ही रहे. तो आप लोगों को 14, 16, 18 घंटे सिलेक्ट एनी ऑफ दीज मिनिमम आपको फास्ट करना ही है एज अ लाइफस्टाइल. 3 महीने का Yes. चैलेंज नहीं है, 6 महीने का चैलेंज नहीं, एज अ लाइफस्टाइल. यू गेट मी? तो एज अ लाइफस्टाइल. सो वीकली की Yes. बात करते हैं भवनीत. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट वीकली फास्ट. ये क्या है, Yes. कैसे किया जाता है, हाउ टू डू दैट? Okay. So first goal will be in a week that once people start fasting for 14, 16 hours, then we will ask people to fast in a cycle because you need to keep changing your fasting times. That is because if, see, it will, I'll explain it to you with an example of weight training. If we are taking the same load and doing the weight training after certain period of time, we stop seeing the results at that same weight because we're not putting our body under stress. So in प्रोग्रेसिव ओवरलोड fasting नहीं हो रहा also है. is kind, fasting is also a kind of a stress that we are putting our body into, which our bodies can easily handle. So first we train our bodies to easily fast for 16 hours. And then once we are a pro in this, what will be the step is once in a week we will ask people to fast for 24 हाँ hours. जमशीद, That is the पानी पी second सकते goal. हैं, पानी पी सकते हैं जमशीद. यस. Yes. क्वेश्चन Yeah. एंड आंसर का सेशन अब 10 मिनट्स में होगा Yes. लास्ट में. ओके. So the second goal will be to do a 24 hours fasting once in a week. Okay. That is the second step. And third step will be we can ask people who are struggling with fat loss 36 hours once in a month. Pardon, come 36 again. hours. People who want to So do fat loss, you said? especially people who are suffering with fat loss, they're not losing their body weight, they're not losing their body fat. 36 hours of fasting once in a month is what we are going to help people do it without struggling and using their willpower. It's going to be a step-by-step process. So this is where you and me are going to help people do that. We're not going to be like, oh my God, 36 hours. 36 hours, okay. 36 hours is what? 24 plus 24, 24 hours, Yeah. 48 hours, 36 hours, 1.5 day कह रही हो? Yes, अच्छा, 2 days तो ये जो 36 सोने hours का निकल फास्ट जाएंगे. होगा वो वीकली वंस होगा कि क्या होगा? ये No, मंथली वंस होगा? that is once in a month. That's once in a once in a month. month. Pick a day. बट Yes, एक we चीज will पूछना check. है मुझे, See, and गर्ल्स no, के लिए it is जिनको so पीरियड्स होते pick हैं. a day. No. It is, yes, it is going to be different for different people. You have to Can fast I know for about ladies. girls who have periods? Periods से पहले करना है या periods के बाद करना है? पीरियड्स के 5 दिन पहले 6 दिन पहले किसी भी तरीके की फास्टिंग नहीं करनी है. नॉट इवन 16 आवर्स, नॉट इवन 14 आवर्स. यू हैव टू ईट एज 5 पर दिन योर पहले बॉडी. नहीं कर रही है, you mean to say? No kind, nothing. Not even और like 14 hours, 16 okay, hours, nothing. let's No say fasting. एक लड़की को 12th of the month में periods होता है, तो she should Yes. stop on the 8th, no fasting. No. 7th या 8th से fasting नहीं करना है. 7th के बाद फास्टिंग Fasting नहीं नहीं करना है. करना. Because Okay. that time मतलब 6 तारीख because में वो फास्ट कर सकती है. 6 तक not a very long fast, and we are going to post that particular length कि how much you can fast in the group, where we will specify कि if you are on this day, this is the amount of fasting hours you can go for. Okay, I'll just give you an idea. From day 1st to day 10th, we can go up to 13 to 72 hours. Enough that Yes. talk about it. Yes. We are going to specifically post this ke as per your cycle, how many hours you can go into fasting. So from day 1 to day 10, ladies who have a period, who have a cycle 13 to 72 hours, we can go. Again, I'll bifurcate how many hours specifically to go for. And from day 11 to day 15, that is the time period where ladies can go up to a 24 hours of fasting. Right? And apart from that, then again 16th to 19th day, we can fast for 24 hours. But from day 11 to day 15, again, we cannot fast for longer hours. So you will see some ladies struggling with the fasting days. Like, some days it's like very easy for us to just go on like maybe 24, 36 जब hours. हमारे इसमें But ब्लड on लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन भी होगा,
न्यूट्रिएंट लॉस भी होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट. Yes. See, and because our hormones during the cycle, they have different needs. Progesterone wants more carb-rich food. So when our periods are about to come, most of the time what we see is we are craving for more carb-rich, food like ice cream चाहिए, बहुत सारा पास्ता चाहिए, बहुत सारा राइस ज़्यादा चाहिए because progesterone wants carb-rich food. You should not be doing a ketogenic food also just before your periods because your requirement for the hormones are different, right? And then once we are done with the period, we have finished on the day first itself, we can just get into a keto diet. We will not be requiring a lot of carbohydrates in the food, right? So it's going to be different. From day first to day 10th, we can actually go for 16, 17 hours of fasting. From day 9 to day 12, we can go for a 24-hour fast. Again, from day 12 to day 15, we cannot go for a longer fast. Again, from day 17 to day 19, we can go for a longer fast. So it's very different. So that is why we Guys, will see so ladies. ये जो group में है अभी 300 people have joined and it is a free Yes. fasting group and the link is there. It's a WhatsApp group controlled by Bhavneet and me. We'll give you free information totally to have all the benefits of fasting. But please remember, ये लेडीज के लिए अलग है, एज रिलेटेड अलग है, क्रॉनिक इश्यूज जिनको है बीपी डायबिटीज वगैरह इनके लिए अलग है. गाइडलाइन सब पोस्ट किए जाएंगे. अगर आपको फ्री फास्टिंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप क्या कहते हैं स्टोरी में मिली लिंक पोस्ट कर दूंगी एंड देन यू कैन ज्वाइन. ठीक है. देखो फास्टिंग के जितना पावरफुल कुछ भी नहीं है. ऑल राइट. एंड आई थिंक एवरीवन शुड फास्ट and it should be a standard for everyone. Okay, so let's talk about, we have spoken about weekly fast, we have spoken about 36 hours of fast and then let's short में cover करते हैं कि monthly fast और per annum वाला fast भी हो गया ना. एक तो 36 हो गया फिर then there is 48 hours of fasting that is once in a quarter. 3-4 Yes. months में, right? Yes, 3-4 महीने में एक बार 48 hours का fast करना है. And the last goal for us is कि we can help people to fast for 3 days on water. That is our premium goal कि लोगों को on yes, water. That is twice in an year. That is twice in an year. And let me tell you, once you do that, जो कोई भी अचीव करेगा, we should keep some giveaway for those kind of people. Yes, of right? course. Why not? Why not? कुछ अच्छा That is a great giveaway idea. रखेंगे. That's the reason I'm telling you guys. ये कुछ पीरियड तक ही ये ग्रुप को मैं फ्री रखने वाली हूँ. इसके बाद में सब्सक्रिप्शन will be charged. So whoever wants can go and join for free right now. बाद में ये चार्ज रहेगा because इसी चार्जेस से फिर हम गिवअवेज करेंगे. Yes. All right. And so एक बार मैं briefly बता देती हूँ the fasting जो different length होती है उसका benefit क्या रहता है. So 12 to 16 hours is normally we'll consider it an intermittent fasting. I wanted to talk about autophagy so people can really know about why to fast. It is not just for fat loss or weight loss. There are a lot of different benefits that we see with fasting. The first one is it starts at 17 hours, which is called autophagy. Our bodies are really unique and they are wonderful that they can heal themselves up. But उसके लिए हमें खाने पे थोड़ा break डालना होगा. So we were, Shifa, we were talking about autophagy fasting that starts at 17 hours. This is something which is really important because I want people to know कि autophagy क्या होती है. Autophagy link डाल रही हूँ in the comment section of our this of our group. Okay. Yes. Yeah. So autophagy fasting. Yes, autophagy fasting starts at 17 hours. 17 घंटे का जब आप फास्ट करते हो autophagy स्टार्ट होती है. autophagy होता क्या है बेसिकली कि आपके जो सेल्स हैं वो खुद को क्लीन करना शुरू करते हैं. सेल्स के आसपास बहुत सारे हमारे रिसेप्टर साइट्स होते हैं जहां पे बहुत सारी एक्सेस इंसुलिन स्टोर हो जाती है या फिर एक्सेस टॉक्सिन स्टोर हो जाते हैं. एंड सेल्स के अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा वो भी बहुत सारे टॉक्सिन्स को स्टोर करने लग जाता है इफ वी आर ऑलवेज ईटिंग. सो फास्टिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्स करना शुरू करती है
तो बहुत बार बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे रैशेस आ गए, या थोड़ा एसिडिटी हो गया, थोड़ा I हेडेक हो गया. दीज आर ऑल द supposed सिस्टम on the दैट योर story is बॉडी इज Tapur Nashka. Okay, that that's all. your body is detoxing, you know. So you might see some symptoms जहाँ पे headache हो सकता है, acidity है, rashes हैं, और fatigue है. These are all the symptoms, and symptoms are not something कि हमने इनको हमेशा एक बुरा नाम दे के रखा है कि अगर ये चीज हो रही है तो मतलब छोड़ दो. That's a way of your body that it is working. अगर आपको स्किन रैश हो रहा है, that's normal, it will go away. अगर आपको फैटीग है, आपको हेडेक है, दैट मीन्स योर बॉडी इज नाउ ट्राइंग टू वर्क एंड ट्राइंग टू डिटॉक्स इटसेल्फ. So it is very normal, it I is very think common. in Just work on detoxing, these symptoms. in detoxing, one more thing helps a lot. That is chlorophyll, right? Yes, I'll talk Chlorophyll. about that as well. So one thing is, I was just explaining अच्छा, autophagy कि एक और जहाँ पे चीज, हमारे मेन जो चीज हमने cell है. बात नहीं किया, क्लोरोफिल पे वापस आएंगे. व्हाट डजंट ब्रेक योर फास्ट? आज तो इतना बड़ा रायता फैल गया. एक बंदी फील ग्रेट यूज कर रही थी, कह रही थी कि इतने बजे खा रही हूँ लेकिन बाद में दूध लस्सी पी रही हूँ. उनको फास्टिंग समझ ही नहीं आया. वो समझ ही नहीं पाए. तो फास्टिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लें आप. पानी अलाउड है, ठीक है. यूनिमाटे जैसा ड्रिंक अलाउड है जो 0 कैलोरी है. ब्लैक कॉफी अलाउड है जो 0 कैलोरी है. ब्लैक टी अलाउड है जो 0 कैलोरी है. कैमोमाइल टी अलाउड है जो 0 कैलोरी है. बेसिकली जो भी चाय आता है ना, जो टी बैग्स वाले होते हैं, इंग्लिश चाय, जो फूल पत्ते के होते हैं या दूसरे चाय होते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है पीछे 0 शुगर एंड 0 कैलोरी और 1 कैलोरी, it is considered as not breaking your fast. This is the fasting we are talking about, not the Muslim religion वाला फास्ट जहाँ पे 0 वाटर होता है या 0 ये होता है. दैट इज नॉट द फास्टिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. ये पानी वाला फास्ट है, 0 कैलोरी ड्रिंक वाला फास्ट है. ऑल राइट, जहाँ पे चाय कॉफी यूनिमाटे जैसी चीजें फास्टिंग में अलाउड होगी. इट विल नॉट ब्रेक योर फास्ट, एज सिंपल एज दैट. इज दैट ऑल राइट? ये बारे में हमने बात करना भूल ही गए भवनीत. Yes, Yes, it's very we important. I It's a think very common confusion people have. ठीक है. yes. अब हम मूविंग ऑन टू क्लोरोफिल. हेवी मेटल टॉक्सिन्स जो बॉडी में होते हैं, उसके साथ क्लोरोफिल जैसा जो क्लोरोफिल इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को ड्राई करके पाउडर किया जाता है. क्लोरोफिल वो होता है जो Green vegetable. फोटोसिंथेसिस में काम आता है प्लांट के. Right? It's a Yes. green, right? So it has the ability to bind with heavy metal and toxins and release it from your body, which usually your body cannot do, right? If Yes. I'm not right, please correct me, Miss Bhavni. Okay, that's correct. That's absolutely correct, because our bodies cannot get rid of the toxins which are stored inside the body. So that is where we take help of some good supplements that can really help our bodies to get rid of the toxins. So fasting में बस toxins body से बाहर नहीं जाते हैं. So that is where chlorophyll is very helpful in that. राइट. So क्लोरोफिल autophagy देखो, आपका हमारे 17 यहाँ पे आठ का टॉक्सिन हमारा. बहुत सारी चीजों से आते हैं. शावर का जो हेड होता है जिसमें पानी आता है, उससे भी हमारे सर में लेड, एल्यूमिनियम, परफ्यूम, बेडशीट वगैरह हर चीज में टॉक्सिन्स आपको आता है. फूड तो फॉर एग्जाम्पल मैगी, मैगी में इतना एल्यूमिनियम फाइंड हुआ है. मेनी थिंग्स विल लीड टू लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी विद हैवी लेड एंड मेटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन योर बॉडी. Somebody is saying Yes. there is no voice. मेरा voice नहीं आ रहा है. Hi शिफा, being सुल्ताना. Hi. I can hear you. आ रहा है Yeah, आपका you can आवाज? hear me, right? So yeah. Anything else you want to talk, Bhavni? क्लोरोफिल के बारे Yes. में भी So बात कर लिया है. chlorophyll हाँ, हो गया, Nubs, and then I was. Nubs is having a repeated question. Can we address that? Maybe she will leave after that then. Is it Yeah, benefited for sure. thyroid? Of course it is, Of because course. it helps Can you know it how? helps your insulin resistance. जब आपका इंसुलिन is the main hormone जो हमारे थायराइड ग्लैंड को आगे सिग्नल देता है टू प्रोड्यूस T3, जो आगे फिर कन्वर्ट होता है T4 में. अगर आपका इंसुलिन ही प्रॉपरली बॉडी में काम नहीं कर रहा है अच्छे से, then your thyroid gland is not working properly because it's not getting the signal. एंड अगर थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भी मिलता है, वो T3 भी बना रहा है, उसके बाद कन्वर्जन होके T4 भी बन रहा है, बट योर सो मच इंसुलिन इज अराउंड द सेल के आसपास रिसेप्टर साइट्स होते हैं. अगर उसके अराउंड इंसुलिन इतना ज्यादा रहेगा कि आपका हार्मोन, आपको पता भी है कि हाँ T3 T4 Penetrate आपका करने नॉर्मल नहीं है, देगा. पेनिट्रेट ही नहीं हो रहा है. That is where you need to get rid of the excess insulin in the body. अगर आपने, insulin is the major hormone.
इंसुलिन को हमने अच्छे से काम पे लगा दिया, उसको बॉडी में अच्छे से बेसिकली उसका फंक्शन इंसुलिन करने जो दिया। इंसुलिन जो काम करना चाहता है, यानी कि उसका काम ये है कि मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज को यूजेबल बनाए, जो कि वो मान नहीं रहा है। उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट, यानी एक क्या कहते हैं, एक स्टाफ है एक कंपनी में, उसका काम है डेटा फिल करना। अब वो बदमाशी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, खाली लंच ब्रेक्स पे जा रहा है, चाहे आप कितने भी स्टाफ लेके आओ वो उसी तरह बिहेव कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहे। तो इट इज एज गुड एज तुम्हारे पास इतने 100 स्टाफ है लेकिन कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इंसुलिन भरते जा रहा है आपके पास, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यस वो डेटा फिल कर नहीं यस। रहा है। सिंपल। हाँ, सो लिंक अगर बेसिकली वहां पे थायराइड को क्लिकेबल, अच्छे एक से मिनट, काम करने के लिए ना, कमेंट्स में अगर लिंक क्लिकेबल नहीं है तो अभी 5 मिनट में मैं स्टोरी पोस्ट करूंगी लाइव होने के बाद, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं वो ग्रुप को। ये ग्रुप आफ्टर I will decide 500 या 1000 participants होने के बाद we are going to keep this group paid. We are not going to keep it free. All right. So you can go and join and be the first few subscribers, few first subscribers, 1000 or 500, whatever. All right. तो लिंक मैं डाल दूंगी फिर से, ये लाइव मैं पोस्ट करूंगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, एवरीवेयर। एंड उसके बाद में इसी को स्टोरी में डाल के हमारा फास्टिंग का लिंक आई विल पोस्ट। ऑल राइट। Sorry to stop you there, Bhavneet. We were talking about thyroid. तो आप कह रही थी कि आजू बाजू रिसेप्टर्स होते हैं जो पेनिट्रेट करने को नहीं देते हैं, इंसुलिन वर्क करना नहीं पाता है बिकॉज थायराइड इसी तरह से फंक्शन होने का प्रॉब्लम होता है। जस्ट लेट मी नो अबाउट दैट। Nubs is talking yes. about that. So basically thyroid के लिए ना, we need like 5 major things, like we need brain, thyroid gland, liver, gut and our adrenals, जो अच्छे से काम करने चाहिए. So when we are fasting, fasting is helping all of them. ब्रेन को काम कर रहा है ऑटोफेजी के थ्रू, के जो हमारे एक्सेस न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, उनको वापस रीएस्टेब्लिश करता है। अगर वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं तो उनको खत्म कर देता है, लाइक दे आर फ्लश्ड आउट ऑफ द सिस्टम। सो ब्रेन इज बीइंग हेल्प्ड, थायराइड ग्लैंड इज बीइंग हेल्प्ड। हमारा जो लिवर है वो तो फास्टिंग में वैसे ही खुद को क्लीन करना शुरू करता है। व्हेन वी डू 24 आवर फास्टिंग, हमारी जो गट है वो खुद को क्लीन करना शुरू कर देती है। सो फास्टिंग इज हेल्पिंग ऑल द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रॉपर थायराइड फंक्शनिंग। सो इट डज हेल्प, बट डेफिनेटली देर इज अ प्रॉपर वे ऑफ फास्टिंग कि हमारा फास्टिंग लेंथ कितना होना चाहिए। So make sure that you are in our group where will be posting the specific time period कि कितने से कितने टाइम में जो आपका थायराइड का है वो, you can't go for a very long hours of fasting also. We will post in the group for thyroid as well. So we will Are you ready with talking all the about materials, Bhavneet, so that we can post yes, one yes, today? yes, yes. ठीक है. Definitely, All right. definitely. Nubs, I Everything is hope available. Bhavneet has answered all your questions about thyroid. See, fasting एक ऐसी चीज है, देखो मैं एक चीज बोलती हूँ तुम लोगों को, मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स, 99% ऑफ प्रॉब्लम्स हमको फास्टिंग की वजह से नहीं, ओवर ईटिंग की वजह से है इस दुनिया में। फिलहाल फिलहाल Yes. बार बार ईट करने के वजह से 1 आवर पे या 2 आवर पे, कुछ लोग तो 2 घंटे पे खाते हैं थिंकिंग दैट इट्स हेल्दी। हमको ओवर ईटिंग एंड फ्रीक्वेंट ईटिंग की वजह से मेजॉरिटी क्रॉनिक इश्यूज, डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ फास्टिंग। टेल मी कितने लोग मरे हैं फास्टिंग से? टेल मी कितने केसेस रिपोर्ट हुए हॉस्पिटल में फास्टिंग से? टेल मी कितने लोग क्या कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस के शिकार है बिकॉज ऑफ फास्टिंग? नो वन, नो वन, राइट? So, Thakur Tanushka, and if we have some questions related, you'll answer that on the group. See, ग्रुप काफी बड़ा है, एज यू सी कि मैंने एक ही बार स्टोरी लगाया है, 300 लोग आए हैं, राइट? ग्रुप में ऐसा होगा कि पोल होगा। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए सबके लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए खुला रखी थी, बट दैट गेट्स सो मैसी। ऑल राइट, भवनीत के पास आओ और मेरे पास आओ, प्राइवेट मैसेजिंग में 3 क्वेश्चंस आपको फ्री मिलेंगे। ऑल राइट, आप 3 क्वेश्चंस आपका पोस्ट करें कि मैं ऐसे कैसे करूं, वैसे कैसे करूं। एनीथिंग बियॉन्ड दैट will be charged as consultation. All right, कंसल्टेशन चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे, पेमेंट मोड बता दिया जाएगा। ऑल राइट, क्योंकि यू अंडरस्टैंड दैट आई हैव अ जॉब, शी हैज अ जॉब, वी आर डूइंग दिस फॉर फ्री फॉर द कम्युनिटी सो दैट यू कैन हैव अ मोटिवेशन एंड हेल्प, बट वी कांट कीप गिविंग आवर 12 hours of the day or 14 hours of the day just on free coaching. You understand that, right?
तो 3 क्वेश्चंस हम देंगे फ्री, यू कैन आस्क, टोटली विल टोटली सेटिस्फाई यू विद आवर आंसर्स, विद आवर इन्फॉर्मेशन. उसके बाद में इट विल बी रिगार्डेड एज consultation, as simple as that. All right. So yeah, I'm already having Thyronome 150 daily. If you're having Thyronome 150 daily, even my mother had it for 75 mg. Now by fasting and feel great system, उनका 50 और 25 mg पे आ गया. So thyroid medications भी कम हो जाते हैं. When your health starts getting better, when you start metabolizing glucose better, when you start doing fasting, intermittent fasting, and you take care of your lifestyle and nutrition, even thyroid के medications कम भी हुए हैं और छूटे भी हैं. I'm giving trainings to client from 5-6 years. ठीक है जी. It's there, don't disturb me. So yes, can we take the question and answer session, Bhavni? Yes, why not? Guys, Let's start with that. anything related to fasting, anything related to health, and you have doubts about fasting, please ask us good questions. We'll take 5 questions now. Yes. So yalla, waiting for a question. 7 evening I'm doing my dinner, then have breakfast till 10, otherwise our lunch will be too late. Okay, so now this is a personal problem, how you will adjust your timing. All right. तो अगर रात को 7 बजे आप खा रहे हो और आपका 10 बजे पहला मील है, विच इज ब्रेकिंग द फास्ट. ऑल राइट. कितना आवर्स का फास्ट हो गया भवनीत इनका? 7 to 7, 12, 15 आवर्स का. इट इज प्रीटी डिसेंट. आप ये कर सकती हो कि आप इधर ब्रेकफास्ट को लाइट कर दो, इधर एक प्रोटीन शेक लो या कुछ योगर्ट लो, और ब्रेकफास्ट को 10 के जगह पे 11 या 12 बजे कर दो. यानी आई वुड सजेस्ट, अगर आप 7 बजे डिनर कर रहे हो तो 12 बजे आप ब्रेकफास्ट करो विद अ योगर्ट और प्रोटीन शेक और समथिंग लाइक दैट दोपहर के 12 बजे. तो आपका पेट को सहारा मिल जाएगा, भूखे नहीं रहोगे आप. ठीक है, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा आपका, और 2 या 3 बजे जो आप लंच करते हो वो कर लो, नो प्रॉब्लम. राइट. तो 16-17 आवर्स आपका फास्टिंग हो जाएगा. राइट Bhavni? Yes, Yeah. why not? Or I'm she already doing protein. can have an avocado, or she can have an avocado to break her Yeah. fast. So she will be again, like, in autophagy for 17 hours, and then she can have her lunch. It Yes. will be very Exactly. beneficial. That is also a good approach. नैना, लकी, दिनार, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है अदर देन 7 o'clock? Excuse me, can you please close the door? Shall we use sugar with black tea? No. Fasting का मतलब हुआ no sugar. Good question. No sugar, no milk in tea. All right. जो चीज आपका फास्ट ब्रेक करता है, Bhavneet, I would want you to make a list of what breaks your fast. Okay. Sugar, Yes. milk, basically anything that has calories. 0 कैलोरी वाली चीजों में आती है, यूनिमाटे आता है, ब्लैक टी आती है, कॉफी आती है, ग्रीन माचा टी आती है, कोई भी बेसिकली ट्री जो फूल पत्तों का है और वो 0 कैलोरी है. ठीक है, पानी वाला चीज. Yes. So they can have, like, a lemon and ginger also. Lemon, ginger, ऐसी water. चीज नहीं है जो आपको वेट लॉस कराएगी. इस प्रोटीन शेक के पीछे साइंस ये है कि मोर प्रोटीन विल स्लाइटली एलिवेट योर थर्मोजेनेसिस. थर्मोजेनेसिस मतलब बॉडी की गर्माहट को थोड़ा बढ़ा देगा. दूसरा, आपका न्यूट्रिशन मोर ऑफ प्रोटीन से आएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा. तीसरा, अगर आप प्रोटीन शेक से कोई एक मील को रिप्लेस कर रहे हो, एक मील इजीली 300 to 600 कैलोरीज रहता है एक इंडियन घर में. ठीक है, जबकि प्रोटीन शेक आराम से सिर्फ 120 या 150 कैलोरी रहता है. तो 500 कैलोरी प्लस 500 कैलोरी को कंपेयर करेंगे 150 कैलोरी से, तो एनीवेज आप कैलोरी डेफिसिट में आ जाओगे. तो दैट्स हाउ इनडायरेक्टली प्रोटीन शेक हेल्प्स यू टू लूज वेट. ओके, कोई भी चीज डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं करती वेट लूज में. कोई भी चीज, सिर्फ एक ही चीज है जो वेट लॉस में हेल्प करती है, बाकी सारी चीज इनडायरेक्ट अप्रोच होते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल अप्रोचेस होते हैं. एक चीज जो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, दैट इज कैलोरिक डेफिसिट इन वेट लॉस. ऑलराइट, वी कांट लाई अबाउट दैट. इफ एनीबडी लाइज टू यू अबाउट दैट, दे आर द बिगेस्ट स्कैमर्स. ऑलराइट, डोंट लिसन टू देम. तो कैलोरिक डेफिसिट एक तरीका है टू लूज वेट. ओके, अब कैलोरिक डेफिसिट को रीच करने के बहुत सारे रास्ते हैं जिसको अप्रोचेस बोलते हैं.
चाहे आप कीटो से अप्रोच करो, चाहे आप पेलियो से अप्रोच करो, चाहे आप कार्ब कटिंग से अप्रोच करो, चाहे आप फास्टिंग से अप्रोच करो, चाहे आप कोई प्रोडक्ट लेने से अप्रोच करो, जैसे फील गुड सिस्टम हो गया या प्रोटीन शेक हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इट विल बेसिकली ब्रिंग यू टू वन पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका एक पॉइंट है, उसको पहुंचने के लिए 1000 रास्ते हैं दुनिया में, कैसे भी आप पहुंचो, डजेंट मैटर. तो ये एक पॉइंट है कैलोरी डेफिसिट. इसको पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है, विच इज द मोस्ट कंफर्टेबल एंड सस्टेनेबल फॉर यू. You can use that. Okay. Can egg white be taken as protein? Yes, it can be taken as protein. We are taking questions about fasting. Any uh, any doubt or any information you need about fasting lifestyle and to start fasting, let me know. I am diabetic with hypothyroidism. Suggest me fibrous supplement because in case say whole wheat chapati is very hard to chew. देखो, होल व्हीट चपाती इज नॉट बेसिकली फाइबर और एनीथिंग, और होल व्हीट चपाती और फ्लावर वाली चपाती में बेसिकली न्यूट्रिशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. 2 या 4 ज्यादा ग्राम फाइबर आपको मिल जाएगा. एज ए ह्यूमन आपको पर डे में 20 ग्राम फाइबर या 30 ग्राम फाइबर चाहिए. आप गूगल करके देख लीजिए, तो वो होल व्हीट चपाती खाने से आपको मिलेगा ही नहीं. ठीक है. तो अगर आपको क्या है, आई एम डायबिटिक कह रहे थे ना आप. देखो गुफरान, अगर आप डायबिटिक हो तो जो फील गुड प्रोडक्ट मैं बताती हूँ वो बहुत असर करता है, और आपको पर डे में आराम से 17 या 18 ग्राम फाइबर मिल जाता है आपको. आपको डॉक्टर ने भी शायद कहा होगा कि फाइबर वाली चीजें ज्यादा लो, राइट. फील गुड सिस्टम में पूरे दिन का फाइबर आपको मिल जाता है, 20 ग्राम तक का फाइबर आपको मिल जाता है, जो आपको कोई फूड में नहीं मिलेगा. 100 ग्राम ओट्स में 1 ग्राम फाइबर होता है. ठीक है. तो आप कितने ग्राम ओट्स खाओगे 20 ग्राम फाइबर के लिए, बताओ. So do we need to drink balance before protein shake? If the protein shake is 0 sugar, you don't need to. But if you mix protein shake with balance, it is absolutely top notch, amazing nutrient and perfect. क्योंकि protein shake से आपको पता है कि constipations होते हैं. It doesn't have fiber. It's mostly छोटे छोटे molecules fused tightly. अगर उसमें balance मिला रहे हो तो it will be top notch. Am I wrong, Bhavni? No, no, not at all. So you can add balance if you want to your protein shake. It's a really good There are thing. coming questions. अगर जब मैं कुछ बवी जब मैं बात कर रही हूँ नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं तो याद रख लो. Is it good to do Yes, there are a workout lot on of fasting? questions that have I come. love workout on empty stomach and fasting. इतना ट्रायल एंड एरर में मुझे फास्टिंग में ही वर्क करना पसंद है. That's the best way. Bhavni will explain to you क्योंकि मैं इतना बात कर चुकी हूँ कि फास्टिंग में 14 घंटे के बाद और 16 घंटे के बाद फास्टिंग के बाद कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है वर्कआउट. इसका एक छोटा एग्जांपल मैं देती हूँ. जब हम रमजान में फास्ट करते थे ना, ड्राई फास्टिंग, जब मैं कार्डियो करती हूँ ना, यूजुअली 40 मिनट के बाद में मुझे जहाँ थोड़ा फैट है ना, मुझे आर्म पे फैट ज्यादा है, मुझे स्टमक के पास थोड़ा फैट है, और मुझे बटक्स एंड हिप के पास थोड़ा फैट है. तो वो 40 मिनट के बाद में इचिंग स्टार्ट होती है वहां पे, जहाँ बॉडी ग्लूकोज खत्म कर लेता है और फैट से आपका एनर्जी ले रहा है, तो हल्की सी इचिंग स्टार्ट होती है. वही इचिंग मुझे फास्टिंग के टाइम पे ओनली 12 या 15 मिनट्स के कार्डियो में हो जाती है. तो फास्टिंग में क्या होता है, ग्लूकोज तो आपका ऑलरेडी लो है, तो ग्लूकोज से एनर्जी ले नहीं पाता बॉडी, जो स्टोर्ड फैट सेल है वहां से बॉडी एनर्जी लेता है. तो विच मीन्स आपका जो फैट लगा हुआ है बॉडी में वो जल्दी असर करेगा फैट लॉस में व्हाइल फास्टिंग. कैन यू एलैबोरेट मोर, भवनी? Yeah. So in this, as you rightly said, the glucose is already low and body is going to use stored body fat to utilize, to provide you with energy. And अगर आप already ketosis में हो, कि आपकी body switch कर चुकी है इन stored body fat के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रात का जो मील है ना आपका, वो सोने से 2-3 घंटे पहले कर लो. So that when you go for your workout, you're already in ketosis, you're utilizing your stored body fat. बिकॉज आप ऑलरेडी उस सिस्टम में आपको इतना ज्यादा कंसिस्टेंट एनर्जी मिलेगा विच इज वे मोर हायर देन ग्लूकोज, बिकॉज फैट इज गिविंग यू अ वेरी कंसिस्टेंट एनर्जी, जहाँ पे आपका वर्कआउट जो है वो बहुत अच्छे से होगा. सो आई डू हाफ मैराथन, आई हैव ran 21 किलोमीटर also like on fasting. Wow, amazing. That is amazing. How much gap required in every meal? 4 hour to 6 hours. Okay. And उस मील के गैप में आप स्नैकिंग नहीं करोगे, आप फास्टिंग करोगे. यानी लंच और डिनर के बीच में स्नैकिंग नहीं करना है, फास्टिंग करना है.
Can a balance be replaced as a meal? If you feel like you have consumed a lot of calorie for the day and you just don't want to have a meal and skip a meal, but आपके पेट को full feel कराना है just because you want to feel satisfied. So yes, you can skip a meal and have a balance. There is no issue, but don't make it a daily practice because balance is not a food replacement. Okay? कभी कभार कर लिया, no problem. नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं भवनीत, देखो और 2 क्वेश्चंस Yes, लेंगे एंड I'm लेट्स just क्लोज yes, द I'm just लाइव. checking the questions because somebody had a really good question. I'm just checking that. चेक करो, मुझे भी एक We क्वेश्चन missed मिला है. out on that. Yeah, just answer that. I'm नहीं, आई checking थिंक one. The person has asked multiple times. एनी One person क्वेश्चन wants to रिगार्डिंग know फास्टिंग? how they can order the products in KSA. Somebody wants to know how they can You order can Feel Great in you KSA. can just directly message me on my Lean Me Up account or my this account, no problem at all. Unimate in Oman, just Google Unimate Oman University. Unimate Oman University, sorry. Google University office in Oman. Just give the members code and you can get it. Or you can just DM any of both of us. दोनों में से एक किसी को आप DM कर सकते हो डिस्काउंट कोड के लिए. What all? हाँ? Yeah. I'm just checking one question. In the Where meantime, can you check another questions. Yeah. So we are taking questions on introduction for fasting. Do you want to know any questions related about fasting? You can know. Yeah. In the Fasting meantime, I'll depression में just भी help करेगा आपको. yes, of course it does because it is going to help you with your brain. So specifically 48 hours of fasting, it helps you in dopamine reset. ये जो हम मोबाइल फोन यूज कर करके हमारी जो डोपामीन का लेवल है वो हमने उसका बैंड बजाई हुई है इन शॉर्ट राइट so what is going to really help you in dopamine reset is 48 hours of fasting and you will be in a different state of euphoria. Once you are in fasting state and you have crossed that 48 hours, you will see how good you actually feel with fasting and your brain it's a complete dopamine reset, a complete. If you are suffering from depression, if you have some major issues going on right now in your life, go for 48 hours of Thakur fasting. It's a Tanushka, great thanks one. for the Really. feedback. She is saying that it's a very, thank you so much, both of you. It's a really helpful session. Thanks so much. Thanks so much. So we are going to post the entire session. I'm very sorry about coming late, and I will not do it next week. We are going to have this again maybe Sunday. Every week Sunday में Yes, रहेंगे. so we'll keep every, once in a week, we'll keep Week it will have it. open so people can have their Oh, questions. the exact stuff So ready for me. Yasu Rahim had You asked can one contact question. Bhavneet or you can contact me via Instagram. अगर आपको प्रोडक्ट लेना है या फिर प्रोडक्ट नहीं भी लेना है, व्हाट्सएप का फ्री फास्टिंग ग्रुप ज्वाइन करना है जो आगे जाके फ्री नहीं रहेगा, you can contact any of us. All right, we are both the Yeah. admins, you know. हाँ. So I think I'll just wind up yeah. with, the things that we want people to do in the first week because there were few things that I wanted to tell people. So start with at least 12 hours, and if you're already doing it, then take it to 14 and 16 hours. So as per your fasting lifestyle that if you are completely new, start with 12 hours. If you're already doing it, then jump up to 14 to 16 hours of fasting in the first week. That is the first target. And apart from that, there are few things that I really want people to एक change. मिनट भवनीत, The cooking एक मिनट. points. ठाकुर Yeah, sure. तनुष्का, हम हमारे ग्रुप में इन्फॉर्म करते हैं कि कब लाइव होगा. हम पोल भी लेते हैं कि कब लाइव आपको बेटर लगता है टाइम के हिसाब से. तो आप फास्टिंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो व्हाट्सएप पे है, आपको बाद में फ्री में नहीं मिलेगा. यस भवनीत, कंटिन्यू. Yeah, sure. So that is our first thing that we want people to do. And then the second thing is I want people to stop using plastic. In the first week itself, that is the first goal that people have to do along with fasting. No use of plastic at all. Because with the use of plastic, we are taking in lot of toxins inside our body, Microplastic. which fasting cannot get rid of.
they are blocking your receptor sites for the cells. Maybe you are fasting but still not getting the results. That is the first thing in the first week. So every week we are going to change different things. So the goal in our first week is that we have to get rid of any kind of plastic or any kind of packaging that we are using in our regular homes. Plastic has to be completely changed. Completely. Like there is nothing, no ifs and buts. It has to be completely thrown away. Do not use plastic in your food. Not at All all. right, that's That one is thing. one change. One change every week. The first one is no use of plastic and get into 12 to 16 hours of fasting as per your lifestyle. Yeah, minimum 16 hours of fasting. ठीक है. This session will Yes, be posted on my yes, YouTube, on Instagram, on TikTok, everywhere. And to join the group link of WhatsApp free fasting group, feel great fasting group, link tree bio में मेरा लिंक है. आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. All right. Take care. Bye bye. We will have this session weekly. And link जो है fasting group का story में भी post करूंगी मैं. All right. Take care. See yes, you. Bye. Bye, yes. Bhavni. Bye, Shifa. It was really good session to connect with you and share so Same much here. of good Same here. information. Learned a lot Yeah, from you. learned a lot from you too, and a lot of questions that came across. Yes. Chalo. Take care. Bye Yeah, bye. sure. Bye. Thank you.